class 12th. This is the second portion, that is your organic compounds. If the teacher asks you the identification of the organic compound, the organic is a bit you can say difficult portion, and lot of marks is being deducted over here because children do a lot of silly mistakes. So you have to be very careful when you are doing your organic portion. So in this, suppose we have two compounds, organic A and B. Any the board teachers can give you any of the organic compounds because it's all depend on them, and alphabets is their choice. Nothing, it's not that I am giving you A B. They can give you any of the labeling. It's in numbers or in alphabets, it's all depend on them. Even the question over here, the experiment, you know na, in organic chemistry we have three parts na: experiments, observation and inference. And you will be happy to know that in your board examination the experiment portion in organic compounds will be given to you. So there is no need to copy the experiment portion. Only you have to write down your observation and inference. So you have to learn only two columns from your manuals: observation and inorganic inference portion. But in inorganic, when we were doing like cations and anions, then we have to learn all the three columns. So don't get confused. In organic, experiment will be given to you, observation, inference you have to do by your own. But in inorganic, nothing will be given to you. Experiment also you have to write down by your own, your observation also, and inference also. You are getting my point? Suppose this is one of the organic compound I have given, and this is my question. So what I will do, first of all, I write down answer number. It is 2, or it's suppose this was your organic compound. I am writing the heading organic compound A. ठीक है, अब उसकी क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन आंसर नंबर 2 में ये ज़रूर लिख देना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए. अब अगेन आई एम टेलिंग यू, teacher is giving you alphabet, number, or whatever, or both the sequence you will see in the paper, then only you understand. But over here I have given you A, so you'll write down A. Now I'll read this question. To about 2 ml of 1% of aqueous solution of organic compound A in a test tube, to it add neutral ferric chloride solution. Now by seeing the experiment portion, you can easily judge what type of organic compound it is and what you have to write down. So in this, it's very important that you will write down this. Then again you over here you will make 2 columns. ठीक है, 2 columns बना लीजिए. एक जगह आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, और इस तरफ आपका लिखना है इन्फ्रेंस. ठीक है, ऑब्जर्वेशन कॉलम मेक इट अ बिग वन, एंड इन्फ्रेंस का थोड़ा छोटा बनाना. सो इन दिस पोर्शन द फर्स्ट वॉज गिवन यू न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड. नाउ यू नो दैट इट्स आंसर इज, अब नंबरिंग भी देख लेना, ये आंसर नंबर 2 है. ठीक है, कंपाउंड आई हैव रिटन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, नंबर क्या है 1 है. 1 में अब हमारा आंसर क्या आता था, बफ कलर्ड precipitate or PPT is formed. ठीक है, now second answer is take 1 ml of organic compound, add 5 ml of your cold dilute aqueous solution of sodium bicarbonate solution, है ना. So in this what we are doing, we are getting observation, a strong effervescence with evolution of CO2 gas takes place. ठीक है, और यहाँ पे अब इन्फ्रेंस में हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड कन्फर्म्ड. राइट, इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ लिखनी पड़ती है, डिडक्शन. डिडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. Organic compound A is benzoic acid. Some children are writing formulas also, but I would advise you write down the English part, वो ज़्यादा बेटर है. फिर भी अगर आपको फॉर्मूला लिखना है C6H5COH, ये बेंजोइक एसिड है. ठीक है, तो प्लीज़ इंग्लिश में ज़रूर लिखिएगा, सही स्पेलिंग्स लिखिएगा. नाउ मार्क्स, वेयर यू विल गेट एंड वेयर द मार्क्स विल बी डिडक्टेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Suppose you are not writing benzoic acid compound confirmed, इसके मार्किंग्स होते हैं, जैसे हाफ नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन टीचर.
सो बेसिकली वैसे बोर्ड्स में तो हाफ नंबर्स के होते हैं, 2 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा वैसे ही देख के यू विल गेट द मार्किंग स्कीम इन मार्क्स ऑल्सो दैट विल बी अलॉटेड दैट यू कैन सी. सो हाफ मार्क्स के होते हैं, सपोज पर हाफ मार्क्स इसके, हाफ मार्क्स इसके, हाफ मार्क्स इसके, ठीक है. हाफ मार्क्स आपके डिडक्शन के. मैंने 2 ही एक्सपेरिमेंट दिए हैं तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ आपको. सो सपोज दिस विल, अब आपने बच्चे ने यहाँ पे बफ कलर लिख दिया, पीपीटी नहीं लिखा, ठीक है. यू आर अ चाइल्ड इज़ राइटिंग बफ कलर पीपीटी, यहाँ पे आउटकम क्या है, पीपीटी, यू विल गेट 0. अगर आप ये पूरा लिखेंगे बफ कलर्ड पीपीटी इज फॉर्म, देन विल गेट मार्क्स. सपोज करो बच्चे ने पीपीटी हटा दिया, यू आर ओनली राइटिंग बफ कलर्ड. कलर्ड का मतलब हो जाता है सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक्स. सो इफ़ यू आर राइटिंग बफ कलर्ड मीन्स यू आर गेटिंग 0. बट इफ़ यू आर राइटिंग बफ कलर्ड पीपीटी देन यू आर गेटिंग मार्क्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ पे मार्क्स आपके कटे? अगर आपने बफ कलर्ड लिख दिया या आपने बफ सोल्यूशन लिख दिया, यू विल गेट बोथ आर रॉन्ग आंसर 0. आप बफ कलर पीपीटी लिख दें, बफ पीपीटी भी लिख दें, देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स. नाउ कम हियर, अ स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस विद evolution of CO2 gas. Suppose a child is writing a strong effervescence with the evolution of gas and not writing CO2 gas, then also you will get 0. अब बच्चे ने लिखा स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस कम्स आउट. किसकी एफर्वेसेंस कम्स आउट? एफर्वेसेंस तो है ना आपकी बहुत सी उसमें आ जाती हैं, तो यू आर नॉट स्पेसिफाइंग थिंग्स ना, सो यू विल गेट 0. आर यू गेटिंग? मीन्स व्हेन यू राइट डाउन दिस थिंग, अ स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस विद एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस टेक्स प्लेस, ना भी लिखो पर आप जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो आपने लिखा, यू विल गेट आंसर, यू विल गेट मार्क्स. नाउ डिडक्शन इज इम्पॉर्टेंट. यू शुड टेल ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वॉट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज गिवन टू यू, इट्स व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज, विच compound is given to you. That's why I have written organic compound A is benzoic acid. So that is very important. In the same way a teacher can give you an organic compound B. तो यहाँ आप क्या करेंगे, B लिख देंगे, ऐसी 2 कॉलम बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस लिखेंगे, डिडक्शन भी बताएंगे. यहाँ ऑब्जर्वेशन सही रखिएगा, पॉइंट सही रखिएगा, आंसर नंबर सही. अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर बी होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बी होता, तो आप क्या लिखते हैं, आंसर नंबर 2, क्योंकि हेडिंग तो आंसर नंबर 2 में ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बी, और वैसे ही आप चलते हैं. So this way you have to focus about your organic portion. I have mentioned you where your marks are deducted or you are not getting the marks. Please don't use whiteners, and again the same platform you have to follow neat and clean work. And again I am telling you that you have to be very particular in this also when you are completing your paper. Now this entire thing we have done in 1 page, so you'll write down 1 page number 1. You have to write down the page numbers. At the end, my name is suppose Shreya Singh. My roll number is suppose 2. Date is, it's today's date 9/9/20. ठीक है, ये क्या है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल. So this way you have to do your things. So please be very particular when you are clicking the photographs of it. Please make sure that clear images should be there. ये नहीं कि टीचर को प्रॉब्लम हो रही है that your image, your whatever you are clicking, you are not doing in a proper manner. This portion should come like 1 श्रेया सिंह, रोल नंबर 2, डेट, दिस थिंग, और ये भी बढ़िए, क्योंकि मार्क्स हम कहाँ देंगे अगर आप आंसर प्रॉपरली नहीं लिखेंगे. So please do neat and clean work. अभी से ही make a proper sequence of it because you are getting very less time. And we have already posted everything. I have informed you many times about your syllabus, many times. So I think it's around more than 1 month we are discussing it. And from 1 month I think you should learn all the things. So we have posted the videos also in your practicals. See that videos again and again, and please write down the answers in a proper manner. Don't use your own casual languages. Organic or inorganic portion, this is a chemistry part, it's specific, and I'm again telling you in practicals hard marking is done. So from the both side, I'm not saying my part, but it's there because I've already mentioned you where the marks are deducted. So please don't ask if I cut your marks if you're writing only buff colored and you're not writing, then don't argue कि ma'am why you are not giving me marks. I have written buff color. I have already mentioned you that it's according to the marking scheme, that if you are not writing, if it is a PPT, you have to write down PPT. If it is a solution, you have to write down solution. If you are writing in solution part PPT and PPT part solution, then you know where you are.
So be very specific, very particular, and please learn whatever it's been given in your books or in your manuals in the same manner, same bookish language you have to write down in your answer scripts. So hopefully you have understood this video, that how we have to attempt our question paper when organic compounds portion is given to us. So all the best children, and work hard and be very focused towards your studies.